We are on our way to a different spot altogether, because little outside the protest site, there are other stories waiting to be told. But now on our way, we found this protest. Hundreds of people have taken to the street, holding posters and banners, demanding 6th schedule, showing solidarity with Sonam Wangchuk. And all these people that you see, they have come from far-flung places. They would eventually go and assemble at the protest site. They are saying the demand had been clear and the peaceful demonstration had been on for the past 18 days and still on. And these people are saying they will not let Sonam Wangchuk be left alone or made him feel alone. So ये जगह है हायल, और इस जगह को बेहतर जानने के लिए और समझने के लिए I will be joined by Nishant. Nishant, thank you so much for your time. My pleasure. How are you doing? I'm very good. How are you? I am fine. You have accustomed yourself to this cold out here. Yes. For the past 2 days I've been struggling, literally. It happens initially, yes it does. So Nishant, why don't you introduce yourself? Where are you from and how long you have been here? So my name is Nishant Tikku. I've been here for the last 6 years now. This is my 6th running year working with Sonam, and I'm originally from Kashmir, but my family is settled in Delhi. You guys have a vehicle? Yes. Have a car. Would you come back to campus after this? Okay, then We'll come back? Oh, come So back. we are still in Fyang, और हम लोग जा रहे हैं अभी to a spot where artificial glaciers have been made. Once again, a project undertaken by Sonam Wangchuk, and essentially to highlight the melting glaciers concern, the problem of glaciers melting, and what that can lead to. क्या कहते हैं निशांत उसको? Ice Stupa. Ice Stupa. They're called Ice Stupa. That is the monastery, na? Yes, that's Fyang Monastery. Fyang Monastery. उधर पे जल जीवन का पानी आया था ना? कहाँ ये जल जीवन? हाँ? जल जीवन तो बड़ा एक क्या बोलूँ सर, स्कीम ही मतलब लद्दाख में फिट नहीं होता। ये स्प्रिंग या छुमीक जिससे लद्दाखी लोग, पहाड़ों के लोग पानी पीते हैं, ये हजारों सालों से थे। हाँ। तो जल जीवन ने आके कुछ अलग नहीं कर दिया। जो हमारे स्प्रिंग्स थे, जो हमारे सोर्सेज थे, जहाँ से पानी पहले इस्तेमाल होता था, हाँ। उसी को टैप किया है बस। उसको कंजर्व करने के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। मतलब I have seen cases across Ladakh where running water pipelines laid by PHE tens of years ago, which were still working, were ripped off, and new Jal Jeevan pipelines were put in just because Jal Jeevan mission के project में हमें दिखाना है काम। ऊपरी हिस्सा वाला पाइप जहाँ से पानी आते हैं घरों में, वो जम जाता है कहीं कहीं जगहों पे ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जम गया, उसके बाद क्या करना है? बिल्कुल विंटर में पानी नहीं पीना है क्या? फिर ये लोग बोलता है क्या पता है सर, वो मुझे सबसे जोकिंग लगा है निशान भाई। ये बोलता है कि इंसुलेटेड करो, फिर एक गरम वाला वो होता है ना एक स्टोव जैसा, उससे आप गरम करके फिर पिघला। फिर हमने बोला ये सब कुछ करना ही है, तो फिर ये सब तो पहले भी कर रहा था मैं। ब्लैक टॉप सड़क को 5 फुट खोद के पाइप डालो, फिर उसको भरो, और जिस तरीके से काम होता है, मतलब स्किलमैनशिप भी बहुत अच्छा नहीं है। आप जब भरते हो कई बार वो पाइप टूट जाता है, दब जाता है, फिर उसको खोद के निकालो, फिर करो। फिर लीकेज होके जो अंदर जो जमीन जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं ना, फिर गाड़ियां फंस जाती हैं वहाँ। So Nishant, myself, and can I just show Hussain once? No. Hussain has been very kind, very cooperative, and he has helped me out so much. Hussain is also an independent journalist, और हम तीनों मिलके अभी आए हैं जहाँ पे वो आइस स्तूपा रखा गया है। ऑटोमेटेड आइस स्तूपा। सॉरी? ऑटोमेटेड आइस स्तूपा रखा गया है। जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज अ न्यू टेक्निक दैट वी हैव बीन वर्किंग ऑन सिंस लास्ट ईयर। वी हैव परफेक्टेड इट दिस ईयर। This is an automated system which does not have manual intervention. Manual intervention, और इस जगह का नाम है फतेरक। फतेरक इन फ्यांग में फतेरक बोल के जगह है जहाँ पे इसको बनाया गया है। वो है आइस स्तूपा। That's the ice stupa we have been talking about, the glacier which they have made, and this is called
stupa. This is called stupa, and इसी फॉर्म में बनाया गया. And stupa has a religious sentiment. बेसिकली जो आइस स्तूपा का नाम आया है वो ये जो स्तूपा आप देख रहे हैं दिस रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड वो ये पुराने ज़माने से यहाँ पे बनाते आते हैं लोग. मैन मेड है ये. और इसी फॉर्म में जब पानी को ऊपर स्प्रिंकल किया जाता था तो इसी फॉर्म में बनाया गया है. तो इसीलिए इसका नाम जो है वो आइस स्तूपा रखा गया है ताकि एक लद्दाखी वो जुड़ जाए इसके साथ, एक सेंटिमेंट्स भी जुड़ जाए और लद्दाखी लोग भी इससे जुड़ जाए. तो एक अच्छा सा दिख रहा है इधर पे थोड़ा. जी जी. Okay, so this is called stupa, and yeah. it has got religious sentiment. And इसी से प्रेरणा लेके इसे बनाया गया है. So we have to climb down. Yep. From this side? Yeah. Okay. From that side. Okay. I'll be very slow. पूरा मसला इसी को बचाने में है. राइट. यहाँ पे मतलब आप देख रहे हैं अभी इतना पैरेलल है. हाँ. पुराने ज़माने में यहाँ पे भी जो है एक फुट बर्फ होते थे. पूरा बर्फ में ढका रहता था. मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये ग्रीन पैस्चर कहाँ से आया? ये वाला जो आप देख रहे हैं. हाँ. सो ये आप देखोगे ना, ये एक पानी का चैनल सा दिख रहा है. इसको लद्दाखी में बोलता है यूरा. हाँ. तो जब समर होता है ना तो ये यूरा में पानी आता है. ये पानी आने की वजह से ये सारी ज़मीन जो है ये सैचुरेट हो जाती है और इस चीज़ को लद्दाखी में स्पंग बोला जाता है. स्पंग. या स्पंग बेसिकली मीन्स meadowy section of land where water and land is at the same old level. From there? Yeah. Okay. इतना भी डिफिकल्ट नहीं था. ये पानी पी लिया? या इससे साफ पानी क्या मिलेगा आपको. मैं भी पी लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगा है. इसी को बोतल में डाल के हिमालयन स्प्रिंग वाटर के नाम पे 100 रुपए का बोतल है यार. Oh, sweet as Rasgulla. Oh. So finally we have reached to the Ice Stupa, and this is artificially created. इसके पीछे मकसद क्या है, कारण क्या है, उसको दिखाएंगे, समझेंगे निशान से. लेकिन दिखने में लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है. लेकिन it's important we all understand the importance of it. Yeah. So this is a system that we have tried and tested this year, which has been working very well. This is an automated ice stupa, which does not require human intervention. Okay. You don't need to come every day And to switch start. on or switch off. Switch on, switch off. You don't have to do that. Right next to me, you see this is a valve. This is a three-way valve. The water is coming with this pipe from up there in the valley. The center pipe is going into the ice stupa and all the way to the top. And the third pipe is excess and going into the river. We have designed the system in such a way that with respect to the water temperature, that's the sensor in there, and the ambient temperature, the sensor right here. The program system understands when to sprinkle the water and when not to. Because a beautiful property of water is, if sprinkled in peak cold, it will freeze into ice stupa or midway ice. itself. Yeah. But if it is sprinkled at a time like right now, when the temperature is +6, +7 degrees, if I sprinkle water right now, it's going to melt the structure. So hence this system, with respect to the water and ambient temperature, usually pops open at around 5 or 6 in the evening, sprinkles throughout the night, and closes down and lets the water into excess as the morning sun hits. And in the peak of winters,
when there are chances of water pipeline freezing, because the ambient temperature is -15, -20, it understands the temperature of the water, and if the pipeline is about to be frozen, then it opens the excess so that low pressure scenario sucks the water out and the pipe is not frozen. And it will restart the pipe again and sprinkle water on the system when the temperatures are in the range of freezing ambient. So basically the sensor understands the temperature outside. Yep. The water is coming from a higher elevation to a lower elevation just by gravity. There is no pump, no energy, no electricity involved. This system is a standalone system. It uses the sun's energy by that solar panel. The power comes, there's a battery inside this passive solar box, and this battery recharges during the day and then tells what to do to the valve. The first documented artificial glacier is back from 10th century and techniques have come up. लेकिन जिस तरीके का आर्टिफिशियल ग्लेशियर हम बनाते हैं, दिस इज वर्टिकल आर्टिफिशियल ग्लेशियर इन शेप ऑफ अ स्तूपा. में इफ यू लुक एट इट, लुक्स लाइक अ कोन. द आइडिया बिहाइंड द कोन इज cone holds the most volume with respect to the least surface area. Right. So that's the idea. Right. Yeah. Layman's language में इसका purpose क्या है? इसका purpose ये है कि पुराने ज़माने में जब लद्दाख में बर्फ़ ठीक ठाक पड़ती थी, इस जगह पे भी फुट, 1.5 फुट, 2 फुट बर्फ़ पड़ती थी. हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं ना, वहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर फ्यांका ग्लेशियर है. वो ग्लेशियर उसी ऑल्टीट्यूड पे आज से 100 साल पहले भी था. वो तभी पिघलता था जब अभी पिघलता है, जून के एंडिंग या जुलाई के शुरुआत में. लेकिन लोग जो यहाँ खेती करते हैं उनको पानी कैसे आता था, क्योंकि खेती जब शुरू करते हैं, सोइंग सीजन इज अप्रैल में. अप्रैल मई में क्या होता था, गांव से लेकर ग्लेशियर के लेवल तक जितनी बर्फ पड़ी होती थी ना, वो धीरे धीरे करके पिघलती थी. अच्छा. और यही बर्फ पिघला के पानी पहुंचाती थी. लेकिन अभी आप देख रहे हो आपके आसपास बर्फ नहीं है, कहीं पूरा बैरन है. राइट. So due to the reduced snowfall in the last few decades, Ladakhis, which are a predominantly agrarian community, they face water shortage in the months of April, May and half of June. और ये 2.5-3 महीने खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सीड्स सो करते हो, उन सीड्स को उगने के लिए शुरुआती में पानी होना बहुत ज़रूरी है. अब जब ये बर्फ़ इस जगह पे अब नहीं पड़ती है, तो हमें किसी तरीके से पानी पहुंचाना है, क्योंकि खेती तो तभी शुरू हो रही है. ग्लेशियर तो मेरा जून एंडिंग जुलाई बिगनिंग में ही पिघलेगा. तो ये 2.5-3 महीने के लिए हम इस तरीके के आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स मिड ऑल्टीट्यूड पे बनाते हैं, विलेज के बीच में या विलेज से लेकर ग्लेशियर तक के बीच में, ताकि जैसे जैसे मार्च के महीने में विलेज थोड़ा वार्म हो रहा है, अप्रैल के महीने में ये जगह वार्म होगी तो ये पिघलना शुरू होगा. मई के महीने में थोड़ा ऊपर वार्मिंग ज़्यादा होगी तो वो पिघलना शुरू होगा. और वाटर जो पहले बर्फ़ सप्लाई करती थी इस एरिया में, अब वो ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर सप्लाई करते हैं. और खेती के दौरान जून एंडिंग में या जुलाई बिगनिंग में ग्लेशियर का पानी जब आता है यहाँ पे, तो जितना आप ये वाटर फ्लो देख रहे हैं, इससे 10, 20, 30 गुना पानी होता है. तो वंस द ग्लेशियर मेल्ट, देन इट इज़ ऑल गुड. बट फ्रॉम सोइंग अंटिल द ग्लेशियर मेल्ट फॉर दोज 2.5-3 months, these artificial glacier melt. क्योंकि आर्टिफिशियल ग्लेशियर काम में इसीलिए आता है बिकॉज पहले के ज़माने में इधर पे बर्फ़ हुआ करती थी, और बर्फ़ पिघल के धीरे 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 वो पानी खेती के लिए यूज़ होता था. क्योंकि अभी बर्फ़ है नहीं, तो पानी का स्कर्सिटी है, और उसी स्कर्सिटी को मिटिगेट करने के लिए एक ग्लेशियर्स को बनाए गए, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को बनाए गए. सो दिस आर्टिफिशियल ग्लेशियर और आइस स्तूपा एज दे कॉल इट, while it looks very beautiful, but this is also a telling testimony of everything wrong which is plaguing this earth. And बर्फ़ गायब हो रहे हैं, इसीलिए बर्फ़ आर्टिफिशियली बनाए जा रहे हैं ताकि फसल उगे, लोग पानी की कमी से ना जूझे. और जितना सुंदर ये है उतना ही कड़वा ये सच्चाई है कि प्रकृति में बदलाव आना शुरू हो गया. व्हाट यू कॉल क्लाइमेट चेंज, उसमें बदलाव आना शुरू हो गया. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्लाइमेट के ऊपर कोई इलेक्शंस होता नहीं है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई इलेक्शंस होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोगों में चर्चा भी कम है.
लेकिन लद्दाख के लिए ये तो सच्चाई है और इसमें चर्चा होना बहुत इम्पोर्टेंट है. आई एम लिटरली स्लिपिंग अवे नाउ. ओके. Smash your foot in while you walk. Smash like it. this? Yeah. You'll get more traction. Okay. Yes. Ow. Okay, this is bad. This is bad. आराम से थोड़ा. ये कल रात की बर्फ जमी है. This is the entrance. Okay. It has been a little melty and a little makey. So what is this inside thing made of? So the inside thing, when we start the construction, we make a dome, like a geodesic sort of a dome with local material, with wood and everything. So this helps us to access the inside if we need to in any time, for any reason. So the structure that you see in front of you, this is usually only 1/10 of the size of a usual one. This is an experimental structure, the automation one. अगर आप बाकी जगह जाएंगे इससे 10 गुना बड़ा, चौड़ा और ऊंचा आपको structures दिखेगा. You know, every drop that is melting out here is what is contributing to the flow of the river. पानी को जमने के लिए what do you do? मतलब how do they become an ice? Because it's so cold outside. हाँ. You see that thing in front of you? हाँ. On top of it there is a sprinkler, just like an agricultural sprinkler which breaks the particle size of water हाँ. into minute pieces. हाँ. And the winter of Ladakh, the cold outside, makes it freeze by itself. Okay. Keeping it relevant to the protest which is happening. So Sonam Wangchuk had made it very clear that the water of Ladakh, due to the melting of glaciers, also feeding the whole of North India. Yeah. And other parts of India. We have seen water scarcity in Bangalore. And Sonam Wangchuk is stressing on the fact that climate change is real, the glaciers are melting faster than they should, and that's all happening because of torture to the planet, torture to the mountains, indiscriminate mining, indiscriminate construction. Yep. You build factories, the trucks flying more and more, pumping out pollution, especially diesel ones. How sustainable are these? And who would understand? I'm just curious. I mean, primarily people who rely on agriculture, like where we are standing. If I am to take you 5 kilometers downstream, the agriculture land starts. The person who would not get enough water in the month of April will understand what you just said. Right away to the heart, he would understand, because 10 years back he would have enough water in April to do agriculture, and now he doesn't. Later down the line, when the same water flows down to the Indus, people on the streams, on the side streams of Indus would understand. People in Pakistan would understand, who faced the crazy floods 2 years back. True. You know, the biggest flood of the centuries, right next to the Indus belt. They would understand. And slowly when that water would reach to your cities, your metropolitans and other places, then they would understand. People will understand. Sooner or later, everybody will. And sooner you understand, it's better for one and all. Honestly speaking, sooner you understand, it's better for one and all. Apart from global warming, which has to do with the lifestyle of people in all the cities of the world, what affects the glaciers equally badly is the black carbon or soot that is released by local human activities. And this is serious. Research by Kashmir University had shown that in Ladakh, glaciers near the highway where diesel trucks and taxis ply are melting much faster than other glaciers. So you can imagine, if tourist taxis and trucks can melt nearby glaciers, what would happen if rampant industry, mining, etc. are allowed in this fragile ecology? This will melt all our glaciers in no time. Sonam Wangchuk in multiple videos had tried stressing on the fact that glaciers are going and time is slipping out of our hands. It's just not glaciers melting. Time is slipping out of our hands. And it's not too far before, maybe in our own lifetime, if we do not take corrective actions,
Simply not water scarcity, but possibly you will not even have mountains snow-capped. Yeah, absolutely. And you would only find snow-capped mountains in pictures you have already framed and put up in your drawing room or your bedroom. And शायद स्कूल में बच्चों को सिखाया जाएगा, once upon a time, those Himalayan mountain peaks were snow-capped, and it is up to you to decide whether you want this to become a once upon a time affair, or whether you want this to be your permanent ally, for it to stay with you forever and even beyond you for generations after us. इस प्रोटेस्ट को समझना अगर है तो इस ग्लेशियर को देखना इम्पोर्टेंट है. और कुछ क्षण पहले मैं, हुसैन, निशांत सब चुप बैठे थे इस जगह पे, शांत देख रहे थे इस पहाड़ों के तरफ, इस ग्लेशियर के तरफ, ये आइस स्तूपा की तरफ. और शायद मन ही मन हम सब में था ये सवाल, अगर अगली बार हम आए तो क्या इसको देखेंगे, ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को देखेंगे, या इन पहाड़ों में फिर से बर्फ़ दिखेंगे, मालूम नहीं. This is one thing I learned today. You always cross a stupa clockwise, never do it anti-clockwise. There's a lot of religious sentiment attached to it. And thank you so much for watching the part 1 of the story. And from here begins the part 2 of the story. We will be going to HIAL, which is Himalayan Institute of Alternative Ladakh, HIAL, where Sonam Wangchuk has tried creating a different setup altogether for sustainable living. I can't define what I'm feeling now. You know, it is possibly the most brutal truth that I've witnessed today. Yeah. And if you are from city, you can't even fathom something so grave is happening out here. And you only talk about climate change. एक खालीपन हो रहा है. I don't know next time if I ever come back to Ladakh, what kind of mountains will I see? You are seeing Ladakh from a different perspective, from a perspective of a local person who knows in and out the problems that they are facing. Usually when people come here as tourists, they don't see this. They might come to the Ice Stupa and they will like, oh wow, it's a beautiful piece of architecture people have made. Beautiful piece of art. Art, yeah, but why have people made this? The reason behind it, the struggle that goes in making this in dead of winters by people working with water when it is minus 20 outside. All that struggle, I think this emptiness is because you understand that struggle. You know why this has been made and what is the reason behind it. You know, it is a fact. Every time I've come to mountains, be it in Arunachal Pradesh, be it in Sikkim, those who have not been to Northeast, you must go. Those who have not come to Ladakh, you must come. But I always say that do not go to a place like a tourist. एक टूरिस्ट की तरह मत जाए उस जगह को. अगर उस जगह को समझना है, आप नसीब वाले हो, आपके पास पैसा है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हो, घूमो फिरो, जगह की लुत्फ़ उठाओ, लेकिन उस जगह की जो खासियत है उसको भी समझो, ताकि क्या है ना, आप छोटा सा भी हो तो आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. प्लास्टिक रैपर इधर उधर नहीं फेंकेंगे, सिगरेट बट्स को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, प्लास्टिक बॉटल्स नहीं रखे जाएंगे. बहुत जगहों पे मैंने देखा है अल्कोहल बॉटल्स को सड़क पे छोड़ के चले जाए. एंड ज़्यादातर लोकल्स कहते हैं कि टूरिस्ट लोग आके ऐसे करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा काम है अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए एक शहर नहीं है, हमारा घर है. आप एक घर छोड़ के कभी अगर किसी और के घर में जा रहे हैं तो उसको घर की तरह ही देखो ना, आसान है. और घर से याद आया, हम लोग जाएंगे अभी हायल, और हायल में कुछ ऐसे घरों के बारे में बात करेंगे
जिसके बारे में ना ही कभी आपने सोचा होगा, सुना होगा और देखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना आलीशान घर छोड़ के उस वाले घर में रहना शुरू कर दोगे, लेकिन एक चीज़ जो संभव है, समथिंग विच इज़ पॉसिबल, विल ट्राई एंड शो यू देयर, एंड ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। 20वां दिन हो गया और प्रोटेस्ट आज भी जारी है। सोनम वांगचुक बिना खाए बैठे हुए हैं, बाकी सारे लोग भी अनशन में जुड़ गए, लेकिन हम लोग जा रहे हैं हायल में ताकि आपको दिखा पाए सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट फास्ट क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, कनेक्शन क्या है, और क्यों लद्दाख के लोगों के लिए क्लाइमेट इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हालांकि कोई इस पे इलेक्शंस चुनाव नहीं लड़ रहे, क्लाइमेट चेंज पे चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन आएगा। जैसे कहानी में है ना, अपना टाइम आएगा। ये पहाड़ भी कह रहा है अपना टाइम आएगा, ये नेचर भी कह रहा है कि अपना टाइम आएगा जब आप बेबस होके सीखोगे। चॉइस आपका है, आप बेबस होके सीखना चाहते हो या अभी सीखना चाहते हो। चलेंगे हायर में।